Assalamu alaikum. So in this video we will solve question number 4 of exercise 12b. Exercise 12b. So we have to construct a quadrilateral PQRS. PQRS. So PQ side, QR, RS and PS are the sides of quadrilateral. So first of all we will draw diagonal PR, which is given and equal 9 centimeters. So first of all we will draw and we will draw PR, which is 9 centimeter. So PR equal 9 centimeter. So PR equal 9 centimeter. So here we will write steps for construction. So first point is construction. Draw PR equal 9 centimeter using scale. So PR equal 9 centimeter. So now since Q is 9 centimeter from P. Q is 9 centimeter from P. PQ mean Q is 9 centi. PQ equal 9 centimeter mean Q is 9 centimeter from P. Since Q is 9 centimeter from P, so draw an arc of radius 9 centimeter with P as center. ठीक है. So we will draw an arc of radius 9 centimeter with P as center. So we will open compass to the length 9 centimeter and draw an arc of radius 9 centimeter with P as center. So this is an arc, and as Q is 12 centimeter from R. Q is 12 centimeter from QR mean Q is 12 centimeter from R. Q is 12 centimeter from R, and draw another arc of radius 12 centimeter with R as center. So now we will open compass to the length 12 centimeter. So compass को 12 centimeter तक open करेंगे हम. So now we will draw an arc of radius 12 centimeter. So this is point R and this is 12 centimeter arc.
So this is point Q. This is point Q. Now we will join P, Q and R. Join P, Q and R. So we will join these points with scale. Similarly, so this is point P, P, Q, R. Similarly, since P, S, P, S, since P is since S is 9 centimeter, since S is 9 centimeter from P, since S is 9 centimeter from P, so we will draw an arc of radius 9 centimeter with P as center, Okay, so we will draw an arc of radius 9 centimeter with P as center. Okay, so what इधर हम ये लिख भी देंगे, since S is 9 centimeter from P, so draw an arc of radius 9 centimeter with P as center. And so as P जो था, PS मीन P जो है S से 9 सेंटीमीटर दूर है. इसी तरह RS जो है, RS मीन R is 7.5 S is 7.5 centimeter from R. S is 7.5 centimeter from R. So we will draw an arc of radius 7 point and draw an other arc, of radius 7.5 centimeter with R as center. So we will open compass to the length 7.5 centimeter, and draw an arc of radius 7.5 centimeter. So this is the point, this is point S, this is point S. Join P, S and R. Join P, S and R. So we will join this point with scale. Similarly, this joint S and R. S and R. So this is
our given quadrilateral PQRS. PQRS. So we have to find angle QPS. QPS. We have to find QPS. QPS एंगल जो है हमने फाइंड करना है. QPS एंगल हमने फाइंड करना है. सो एंगल को फाइंड करने के लिए, एंगल को मेजर करने के लिए हमें थोड़ा सा जो प्रोटेक्टर को रखना होगा इधर, और प्रोटेक्टर की जो बेस है इस लाइन के साथ मैच करनी चाहिए. सो वी विल डू with protector. We will measure this angle with protector. So place the protector at point P such that base matches with पॉइंट. ये जो है, ये जो लाइन जो ऐसे कट कर रही है प्रोटेक्टर पर, ये पी के साथ बिल्कुल एग्जैक्टली कंबाइन करनी चाहिए. और ये जो इसकी लाइन है, ये ग्रीन लाइन जो बेस वाली लाइन है, इससे मैच करनी चाहिए. सो एग्जैक्टली शुरू में मेरे से ये वाली जो आर्क है, ये थोड़ी सी जो था मुझे दोबारा से ड्रा करनी पड़ी थी वीडियो को पॉज करके. सो ये लाइन थोड़ी सी मेरे से, लेकिन फिर भी हमने जो एंगल मेजर किया, अगर आपको एग्जैक्टली ये क्लियर नज़र आ रहा हो, सो दिस एंगल इज़ 134, यानी कि 133 एंड 134 के दरमियान में है. मतलब ये जो एंगल है एग्जैक्ट इसका आंसर है 133. सो दिस इज़ आवर एंगल QPS विच इज़ इक्वल 133. ये 130 से आगे 3 लाइन्स जाएंगे तो ये हमारे पास है 133. सो दिस एंगल QPS इक्वल 133. सो ये बात आप याद रखिए कि जब आप लेड पेंसिल से ड्रा करेंगे सो आपके लिए इजी होगा इसको अरेज करना. और अगर बाय मिस्टेकली कोई मतलब यानी कि कुछ मिस्टेक हो जाए आपसे, सो आप इसीलिए इसको रिमूव कर सकते हैं. सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़.